Hello students, let us continue. This was the homework. I hope आप लोगों ने पूरे साइंटिस्ट के नाम लिख लिए होंगे. Please take that classwork and check the things which you have done. Take out classwork. Homework करना compulsory है. Right now it's like I am helpless. So मैं ये आगे का statement बोल रही हूँ कि अगर नहीं किया है बच्चों तो मैं यहाँ पर रेडीमेड बोल रही हूँ, प्लीज वो लिख लो. लेकिन आई वॉन्ट इट हैज टू बी डन. आप बस क्रॉस चेक कर रहे हो जब मैं आपको बोल रही हूँ, राइट? चलो, सो फर्स्ट वन, एंटनी वॉन लुइनहॉफ. इट्स कंट्रीब्यूशन इज he described living cell for the first time. Described living cell for the first time. Scientist number 2, Robert Brown, discovered nucleus. Robert Brown discovered nucleus. Matthew Sheldon, all plants are made up of tissue. All plants are made up of different types of cells. Different types of cells, that is tissue. Theodore Schwann, animal cells are with thin outer wall, today's plasma membrane. Theodore Schwann, animal cell is with outer thin wall, today's plasma membrane. उसी साइंटिस्ट का सेकंड कंट्रीब्यूशन, थियोडोर श्वान का सेकंड कंट्रीब्यूशन. प्लांट सेल has unique outermost covering. Plant cell has unique outermost covering called cell wall. Theodore Schwann का ही तीसरा पॉइंट, plants and animals are made up of cells. Plants and animals are made up of cells. उन्हीं का और एक पॉइंट लिख लो. Schwann and Sheldon postulated cell theory. Schwann and Sheldon postulated cell theory. ब्रैकेट में लिख लो demerit. Demerit didn't explain how new cells are formed. Didn't explain how new cells are formed. Next scientist, Rudolf Virchow, he added this point in the cell theory. Rudolf Virchow, new cells originate from the pre-existing one. New cells originate from the pre-existing one. Pre-existing cells. Bracket में लिख लो, Hominis cellulae cellula. अब ये स्पेलिंग आपको एनसीईआरटी में देखने हैं. ओमनिस सेल्यूलई सेल्यूला. रुडोल्फ विर्चॉव के आगे ही लिखेंगे और एक पॉइंट, मॉडिफाइड हाइपोथेसिस. मॉडिफाइड हाइपोथेसिस एंड गिव मॉडर्न सेल थ्योरी. Give modern cell theory. Right? New cell theory. Modern cell theory में और कुछ points add हुए हैं. That much details will cover in revision part. Right? Okay. Now one more thing. Few students might be feeling कि मैं ये आपको board पे लिख के points क्यों नहीं दे रही हूँ. Some points will be written on the boards. Some point will be dictated. You are supposed to write down, because whatever I teach, it has to be understood by you. Then only we should work, isn't it? And one more thing, जो आपको समझ रहा है वो आप लिख पा रहे हो ना, लिखना कंपल्सरी है. अदरवाइज प्रोजेक्टर पे या फिर यहाँ पे मैं जो आपको दिखाऊंगी वो वहीं पे रहेगा, वो आपके क्लास वर्क में, और क्लास वर्क के द्वारा आपके दिमाग में जाना बहुत जरूरी है. सो प्लीज आप वीडियो पॉज करो, लेकिन मैं जो डिक्टेट कर रही हूँ वो पॉइंट मैं सिखा रही हूँ,
उसी वक्त आपके क्लास वर्क में होने चाहिए. I repeat, the points I dictate should be in your class work when I am dictating it, not sometime afterwards. Right now you are writing down the things. And on the group I am waiting for your doubts. Please call me for doubts. Right, now come to the next part. हमने NCERT रीडिंग किया था. Right, हमने पेज नंबर 126 के पहले 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे. टेक आउट योर NCERT. पेज नंबर 127 के सेल्स के प्रकार हमने सीखे थे, लेकिन वो टोटल डिस्क्रिप्शन जो एनसीईआरटी में उन्होंने पेक्यूलियर लैंग्वेज में लिया है, यू माइट बी फीलिंग, अभी आप थोड़ा समझ पाओगे कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, वो समझनी चाहिए. एक लाइन के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं. जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि अरे ये लाइन का मीनिंग ऐसा भी होता है. सो यू नीड टू बी केयरफुल. राइट, सो लेट्स स्टार्ट एन ओवरव्यू ऑफ सेल. Everyone ready with NCERT? Keep pencil in your hand. Important lines underline करेंगे. नहीं समझ रहा है पेंसिल से सर्कल करोगे. जब मैं पढ़ा रही हूं तब भी और जब खुद पढ़ रहे हो तब भी. Ready? See, an overview of cell. You have earlier observed cell in an onion pill and or human chick cells under the microscope. In your school days, you might have performed some practicals. It might be simple handless sort of microscope, right? Okay. Below that, through that lens, you might have seen thin pill of onion. Onion लेना, उसके छिलके निकाल दो और 2 fleshy leaf होते हैं ना, 2 fleshy structure है ना, उसके बीच में एक thin सा layer आता है, right? वैसे peel off करो, right? Hand lens के नीचे रखो और देखो आपको स्क्वायर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे. So that is what you must have observed cell during school days. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary. See the postulate. Plant cell has unique outermost governing called cell wall. So onion is a plant. Onion cell has outermost governing cell wall. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. Right? Cell membrane, फिर fluid, फिर उसके अंदर membrane-bound structure called nucleus. This nucleus contains the chromosome, which in turn contain the genetic material DNA. Now, right, in first lecture, I try to explain you this word, or rather I introduce these 4 words. DNA, gene, chromatin material and chromosome. Right? Okay. So अब ये पैराग्राफ मैं बस कंप्लीट कर रही हूँ और ये एक लाइन को आज हम अच्छी तरह से समझ लेंगे. Which line? Underline this. What is that? This nucleus contain the chromosome, which in turn contain the genetic material DNA. हमने आज जितनी ही लाइन बहुत अच्छे से समझ ली है. Read between the line जो मैं बोल रही हूँ. ये एक लाइन, it carries huge meaning, and around 30% of 12th you are dealing with genetic material DNA and its behavior. So it's very important. This is basic. Okay, see. Cell has membrane-bound nuclei are called eukaryotes, whereas that lack a membrane-bound nucleus are prokaryote. हमने 2 प्रकार के सेल, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. राइट, आज का होमवर्क वही होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. राइट, नाउ ऊपर मार्जिन पे लिख लो होमवर्क, तो पहले लेक्चर की रिवीजन भी हो जाएगी. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. A cell with primitive nucleus, prokaryote. A cell with true nucleus, developed nucleus, eukaryote. Cell has membrane-bound nuclei called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are prokaryotic. In both prokaryote and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies volume of the cell. The cytoplasm is main arena of cellular activities in both the plant and animal cell. Underline. What is this?
The cytoplasm is main arena of cellular activities. We discussed the word metabolism, right? So within a cell, the fluid which is present, that fluid is main site, main area wherein maximum chemical reactions, metabolism is performed. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in living state. If these chemical reactions stop, the cell will be dead. If the chemical reactions are on, the cell will be living. यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन है जो हमारी डॉर्मेंट सीड होती है. Do you know the word dormant seed? कि आप बाजार से गेहूं लाते हो, राइस लाते हो, डब्बे में भर के रख देते हो. What is that? That is a dormant seed. सालों डब्बे में भर के रख दो, उसको बस पेस्ट ना लगे, कीड़े नहीं लगे बेशक. वो सीड जिंदा है, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म राइट नाउ अरेस्टेड है. In dormant seed, the metabolism is right now arrested. But if you sow the seed, the water will enter in and metabolism will again switch on. Right? So otherwise, metabolic reactions are occurring, the cell is living. Metabolic reactions are not occurring, cell will not be living. Right? So see. The cytoplasm is main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in living state. Besides the nucleus, the eukaryotic cell has other membrane-bound distinct structures called organelle, such as endoplasmic reticulum, ER, Golgi body, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuole. मैंने आपको डेवन को एक थोड़ा सा वो चार्ट बताया था, याद है? उसमें हमने पूरे सेल में क्या क्या होता है. सो सेल के अंदर सेल बाउंड्रीज होती है, फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस होता है. यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहेंगे. यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रहेंगे. यही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं. ये जो लाइन है, इसको अगर मैं फॉर्मूला स्टाइल में लिखूं, व्हाट वी आर राइटिंग डाउन इज eukaryotic cell. Right? It has cell wall, plasma membrane, cytoplasm and nucleus. eukaryotic cell. ये जो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम एक कॉमन शब्द यूज करेंगे, सेल इन्वेलप्स. These are cell envelopes, right? Then ये साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. Right? One will be liquid part. It will be liquid part, which is called cytosol. साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है, उसको हम बोलेंगे साइटोसोल. राइट? अब ये जो साइटोप्लाज्म का सॉलिड पार्ट होगा, सॉलिड पार्ट, इसमें मेन आता है ऑर्गेनेल्स. यूकैरियोटिक सेल में ER, Golgi bodies, right? Then it will be mitochondria, then क्लोरोप्लास्ट. लिख रहे हो सब लोग? मेरे साथ लिख रहे हो सब लोग? Right? So see, eukaryotic cell, cell wall plus plasma membrane, collectively called cell envelope. Fluid in it, cytoplasm. Cytoplasm has two parts. So liquid part, cytosol. Solid part contains variety of organelles. Right? ये organelle के example जो आप जानते हैं. न्यूक्लियस, उस दिन हमने स्ट्रक्चर सीख लिया. ट्रू न्यूक्लियस हैज इन्वेलप बॉन्ड. न्यूक्लियस का इन्वेलप बोलो, नहीं याद आ रहा है? पीछे एक पेज पीछे चले जाओ, देखो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को क्या लेबल किया था हमने. यू नीड टू यूज द इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव. रेडीमेड फॉर्म नहीं, इधर हर बार बोलेगा, हर बार नहीं मैं बोलूंगी. देखो मिल गया शब्द,
न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का फ्लूइड, न्यूक्लियोप्लाज्म, वेरी गुड। पोर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, और वो जो पूरा नेटवर्क न्यूक्लियस के अंदर वो थ्रेड बिखरा पड़ा है ना, पूरा नेटवर्क जैसा, उसको हमने क्या बोला था? क्रोमैटिन नेटवर्क। और न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्फेरिकल बॉडी ड्रॉ की थी, राउंड स्ट्रक्चर। द डेंस स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। सो ये न्यूक्लियस के पार्ट ऑलरेडी, ये न्यूक्लियस के पार्ट ऑलरेडी आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूं, आप लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड, देन न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल। सब लोग लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। राइट, ये आ गया टोटल यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मूला। ये आ गया टोटल यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मूला। राइट, चलो अब इसी को अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं, प्लांट सेल इज इक्वल टू सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। राइट, एनिमल सेल के बारे में लिखो तो इफ आई एम राइटिंग डाउन अबाउट एनिमल सेल, चलो क्या मॉडिफिकेशन करने में है एनिमल सेल के लिए? आई एम जस्ट नॉट राइटिंग सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, एंड फॉर न्यूक्लियस लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे आप। राइट, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल लिखती हूं तो क्या लिखूंगी मैं? सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस जैसा। समझ रहे हो? राइट, ओके। अब ये फॉर्मूला में और एक शब्द ऐड करेंगे हम। अगर प्लांट सेल का सेल वॉल निकाल दिया तो ये जो बचे वाला पार्ट है, व्हाट लेफ्ट? प्लांट सेल का मैंने सेल वॉल निकाल दिया, तो ये जो बचे वाला पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, आई एम जस्ट करेक्टिंग द स्पेलिंग। राइट, ये तीनों को पकड़ के यहां पे कौन सा शब्द आएगा? इट विल बी प्रोटोप्लाज्म। So in simple language, what I say, animal cell has cell wall plus protoplasm, one more combination. Okay, plant cell के बारे में cell wall plus protoplasm. Animal cell में क्या बोलेंगे हम? Animal cell is made up of only protoplasm because animal cells don't have cell wall. Isn't it simple representation? बराबर? चलो लिख लिया सब लोगों ने, समझ रहे हो? क्वेश्चन के आंसर के लिए तैयार? ये फॉर्मूला देखेंगे, मैं जो क्वेश्चन ओरली पूछ रही हूं उसके आंसर्स देंगे आप। रेडी? हाँ, dense spherical body present in the nucleus is nucleolus. Dense spherical body in the cell is nucleus. Outermost covering of animal cell, outermost covering of animal cell, plasma membrane. Second layer, second covering of plant cell, second covering of plant cell, चलो बोलो। Yes, plasma membrane. In plant cell, the cytoplasm is immediately bounded by. In plant cell, the cytoplasm is immediately bounded by. Answer, plasma membrane. Very correct. Right? The plasma membrane
is enclosed by, in plant cell, the plasma membrane is enclosed by, what is that? Cell wall. Very good. Right? Okay. Liquid part of cytoplasm is called. Liquid part of cytoplasm is called cytosol. Right? Okay? समझ रहे हो ना सब लोग? हाँ. The genetic material in prokaryote is in which form? The genetic material of prokaryotic cell is in which form? Option दे देती हूँ. Nucleus, nucleoid. Yes, nucleoid. Right? Okay. Name 5 double membrane bound organelles. Name 5 double membrane bound organelles. What are they? ER, Golgi body. Then mitochondria, chloroplast. Okay. Then पांचवा क्या बोलेंगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड. कुछ याद आ रहा है? न्यूक्लियस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. लेकिन थोड़ा फॉर्मूला की तरफ ध्यान दो. मैंने ये जो ऑर्गेनेल यूज किए हैं, ये ऑर्गेनेल, राइट, इनसे अलग ऑर्गेनेल न्यूक्लियस को लिखा है. क्यों? क्योंकि वो हर सेल में होना जरूरी नहीं है. न्यूक्लियस may be present in a cell, may be absent in a cell. एग्जांपल हमने दी थी. या टेल मी अ ह्यूमन सेल विदाउट न्यूक्लियस. लास्ट लेक्चर में बोला था ह्यूमन सेल विदाउट न्यूक्लियस हैविंग एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन. यस, आरबीसी. राइट? सो मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे. सो ये ऑर्गेनेल जनरली होते हैं. न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं कंसीडर करेंगे. देखो ये फॉर्मूला तो साइटोप्लाज्म अलग है, न्यूक्लियस अलग है. लेकिन न्यूक्लियस को हम प्रोटोप्लाज्म का पार्ट कंसीडर करेंगे. राइट? चलिए. प्लांट सेल cell wall is removed. The remaining structure is called plant cell wall is removed. The remaining structure is called protoplasm. And in this formula, or whatever written on the board, which structures are absent in a prokaryotic cell? ये जो मैंने पूरे लिखे हैं, इसमें के कौन से स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे? प्रोन्यूक्लियस, ER, Golgi body, mitochondria, chloroplast. These structures are absent. राइट? तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो क्लोरोप्लास्ट चाहिए. सो अगर ये ऑर्गेनेल नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसे काम करेगा? सो देखो, सी, हाँ, प्रोन्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियोइड है ना. प्रोन्यूक्लियस जैसा बेहतरीन काम नहीं होगा लेकिन काम तो होगा ना. राइट? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो शायद अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर ले. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करना चाहे तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे मेसोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया जैसा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर उसको हम बोलेंगे मेसोसोम. उसके पास जरूर है. तो हम कैसे बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर मेसोसोम. प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर मेसोसोम. क्लोरोप्लास्ट जैसा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरोप्लास्ट जैसा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है क्रोमैटोफोर. क्लोरोप्लास्ट जैसा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर क्रोमैटोफोर. चलो बोलो मेरे साथ. प्रिमिटिव स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट क्रोमैटोफोर. प्रिमिटिव स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट क्रोमैटोफोर. क्लोरोप्लास्ट क्रोमैटोफोर. क्लोरोप्लास्ट क्रोमैटोफोर. क्लोरोप्लास्ट क्रोमैटोफोर. बोलो देखिए. राइट? चलो. Primitive structure like mitochondria. Primitive structure like mitochondria, mesosome. Mitochondria, mesosome. Mitochondria, mesosome. Mitochondria, mesosome. समझ रहे हो? So ऐसे बोलते जाएंगे, हर बार बोलते जाएंगे. Okay, come to next paragraph. See, besides the nucleus, the eukaryote
mitochondria, microbodies, and vacuole. The prokaryotic cell lacks such membrane-bound organelle. The information on the board and this paragraph you are supposed to refer. Write down tomorrow's homework. Differentiate between prokaryotic cell and eukaryotic cell. इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं आपने. डिफरेंसेस के अंत में हमेशा एग्जाम्पल लिखेंगे. Right? चलो, on to next one. Ribosomes are non-membrane bound organelle found in all cells. ठीक है, अब राइबोसोम को डिटेल में सीखेंगे. Ribosomes are protein factories. सेल का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केमिकल प्रोटीन बनाने का organelle कौन है? राइबोसोम. It has only one membrane, right? And this single membrane bound organelle are found in prokaryote as well as eukaryote, right? See, ribosomes are non-membrane bound organelle found in all cells, both eukaryote as well as prokaryote. Within the cell, ribosomes are found not only in cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plant and mitochondria and on the rough ER. Right? Ribosome, यहाँ पे ऑर्गेनेल में लिखेंगे राइबोसोम. ये राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगा ऐसी बात नहीं है. राइबोसोम्स ये साइटोप्लाज्म में तो है ही, राइट? साइटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट में तो है ही. इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम होते हैं और ईआर के सरफेस पे भी राइबोसोम होते हैं. So ribosomes are in the cytoplasm, ribosomes are in the organelle also, right? So that is what is the line says. And ribosomes are even present in prokaryotic cell cytoplasm. क्योंकि प्रोटीन बनाने का मशीन कौन है? राइबोसोम. Okay, see, ribosomes are non-membrane bound organelle found in all cells of both eukaryote as well as prokaryotes. Within the cell, ribosomes are found not only in cytoplasm but also within two organelles, chloroplast and mitochondria and on the rough ER. Animal cell contain another non-membrane bound organelle is called centriole which help in cell division. Underline ये line, ये जो organelle है ये आप पहली बार शायद सुन रहे हो. Actual उसका नाम centrosome है. Centrosome, right? In the bracket I am writing down centriole. इसमें का डिफरेंस बाद में सीखेंगे. इसमें का डिफरेंस बाद में सीखेंगे, right? So centriole, centrosome can be parallelly used, but they are not exactly similar. Centrosome, centriole can be parallelly used, but they are not exactly similar, right? So देखो, ये centrosome सेल को सेल डिवीजन करने में मदद करता है. So we'll discuss in detail, right? So these are in prokaryotic cell lack membrane bound organelle, right? यहाँ पे और एक उन्होंने रेफरेंस दिया है कि प्लांट सेल के पास सेंट्रोसोम नहीं होगा, एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम होगा. Cell differ greatly in size and shape, activities. For example, mycoplasma, the smallest cell, underline. Mycoplasma, the smallest cell, only 0.3 μmicron. ये रट्टा मारना है. ये बाजू में मार्जिन में लिखेंगे. आप लिखो टाइप ऑफ सेल एंड साइज, यहीं पे लिख लो बाजू में. क्लास वर्क में भी लिख सकते हो. आपने क्या लिखना है? टाइप ऑफ सेल एंड इट्स साइज. ओके, यहां पे लिखेंगे PPLO, smallest cell. PPLO, smallest cell. बोलो मेरे साथ, pleuropneumonia-like organelles. Pleuropneumonia-like organism. PPLO, oblique mycoplasma. इसी को mycoplasma भी बोलते हैं. आगे ये शब्द है आपके सिलेबस में, राइट? उसकी साइज देख ली, 0.0 μmicron in length. While bacteria
could be 3 to 5 mu micron. सेकेंड सेल लिखिए यहाँ पे बैक्टीरिया, उसका साइज 3 to 5 mu micron. Right? Okay, turn the page. पेज नंबर 128 पे आ जाओ आप. वहां पे 8.2 डायग्राम है और वहां पे अलग अलग साइजेस दिए हैं. देख रहे हो? देखो सबसे पहला टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 म्यू माइक्रोन लिखो यहाँ पे. राइट? और इसमें दोनों इसके भी अलग अलग दिए हैं ना, पीएलओ माइकोप्लाज्मा के भी अलग दिए हैं. राइट? टिपिकल बैक्टीरिया उसका शेप. राइट? टिपिकल बैक्टीरिया, पीपीएलओ, वायरस एंड टिपिकल यूकैरियोटिक सेल सब यहाँ पे लाइन से लिखेंगे, उसके साइजेस लिख लो. अभी करना है बेटा, मेरे साथ करना है. Okay, sure. Come back. The largest isolated single cell is egg of ostrich. Right now, next one. Egg of ostrich. Largest eukaryotic cell. ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो egg of ostrich. लिख रहे हो सब लोग? In the bracket, largest eukaryotic cell. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 mu micron in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, चपटे, flattened, flying disc कहते हैं ना, वो टाइप का. Right? Polygonal मतलब something irregular, hexagonal. Sort of. Right? It is polygonal shape. Columnar. It's columnar. Right? Cuboid. ये देखो, ये क्यूब जैसा. Something like a cube. Polygonal, column-like, cuboid. क्यूब जैसा, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर थ्रेड लाइक, ऐसे लंबा थ्रेड जैसा, फाइबर जैसा. राइट? सो शेप्स भी क्लियर. राइट? सो दिस इज व्हाट इज कंटेंट ऑन पेज नंबर 126 127. नाउ कम टू द लाइन जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी. दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम व्हिच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए. ये जो लाइन है, ये लाइन को हम अब बहुत अच्छे से समझ लेंगे. ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है, 12th में बहुत ज्यादा सीखना है. तो मैं कुछ एडिशनल पॉइंट यहाँ पे बताऊंगी, तो वो भी आपने करने हैं. वो बुक में नहीं है मैडम. राइट? आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ाओ, नहीं पढ़ा रही हूँ. बट हम ऐसा कंटेंट सीखेंगे जो हमको थरो इंफॉर्मेशन देगा और हम एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे. राइट? चलो, सो कम टू वर्ड डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, जीन, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम. ये शब्द, इनका पूरा स्ट्रक्चर, राइट, ये कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं. सी, ये मैंने एक स्पाइरल या वेवी लाइन ड्रॉ की. ये है डीएनए का एक स्ट्रैंड. ये है डीएनए का एक स्ट्रैंड. जैसे कि मैंने आपके बर्थडे की रिबन होती है ना, एक रिबन ली और उसको एक ग्लास के रॉड के साथ कॉइल किया. बर्थडे रिबन को एक ग्लास का रॉड लिया और उस पे कॉइल किया, तो वो कैसे दिखेगा? दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. नाउ what I do, I take second ribbon and coil on the same glass rod in such a way. So एक हो गया black strand और दूसरा हो गया blue strand. समझ रहे हो? एक हो गया
ब्लैक स्ट्रैंड, दूसरा हो गया ब्लू स्ट्रैंड, और ये दोनों के बीच में समझ लो ऐसे स्टेप्स है। ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। ये डायग्राम आपने बहुत बार देखा होगा। ये डायग्राम ड्रॉ करने में आपको दिक्कत जाएगी, आई नो, जैसे भी होता है ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करेंगे 12th में सिखाऊंगी, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस डायग्राम इज अ DS DNA. What is DS DNA? Double stranded DNA. What is this? Double stranded DNA. DSDN. DNA is a genetic material of all cells. Write down ये 5-star point है, ये 5-star point है, लिख लो। DNA is genetic material of all cells. All cell मतलब in prokaryote as well as eukaryotes. It is genetic material of all cell in prokaryote as well as eukaryote. Okay, तो आप बोलेंगे मैडम फिर किसके पास डीएनए नहीं है? कोविड के पास नहीं है। और इस कोविड-19, ये जो फिलहाल आपको और मुझे घर पे बिठाने वाला वायरस, right? So this virus has RNA genetic material. Does it mean all viruses have RNA genetic material? No. Viruses are really different. वो सेल है कि नहीं ये भी हमको नहीं पता। Virus is not a cell. क्यों? उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके पास सेल इन्वॉल्व है, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, राइट? कभी डीएनए है, कभी आरएनए है। ओके, ये वायरस साइटोप्लाज्म नहीं है तो केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। और अभी हमने बोला अगर मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है तो वो लिविंग नहीं है, तो फिर ये वायरस कैसे जीता है? ठीक से सुन, वायरस अगर होस्ट सेल के बाहर है, वायरस अगर होस्ट सेल के बाहर है तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों? उसके पास खुद का साइटोप्लाज्म नहीं। वही वायरस, राइट, आपको मिल गया क्योंकि आप घूमने गए, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर किया, राइट? ओके, बहुत हाथ मिला एक दूसरे से, हाथ धोना तो उनको पता ही नहीं, राइट? ये सब एक्टिविटी आपने की तो वो वायरस आपके बॉडी में एंटर कर गया। वेलकम, राइट? योर बॉडी इज सो ससेप्टेबल। इम्यूनिटी तो पता नहीं कितनी है, एक्सरसाइज तो हमारा करना होता ही, ठीक? सो वो कंडीशन में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपकी इम्यून सिस्टम पुअर है, आप लोगों से बड़े मिलते जुलते हो, आपको रूल फॉलो करना आता नहीं, सॉरी वी गेट यू टॉक, राइट? लेकिन वो कंडीशन में अगर वायरस आपके बॉडी में आता है, आपके सेल के अंदर जाता है, तो वायरस क्या करेगा? आपके सेल का साइटोप्लाज्म खुद के काम के लिए यूज करेगा। सो गेट द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। वायरस सेल के बाहर, साइटोप्लाज्म नहीं है तो वो डेड स्ट्रक्चर है। वही वायरस आपकी बॉडी में आ गया, आपके सेल में आ गया, तो आपके सेल का साइटोप्लाज्म वो खुद का साइटोप्लाज्म बोल के यूज करेगा और मेटाबॉलिज्म करवाएगा। तो आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर वायरस लिविंग स्ट्रक्चर है, आपके बॉडी के बाहर, आपके सेल के बाहर वायरस डेड स्ट्रक्चर है। तो वायरस क्या है? इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। वो चौराहे पे है, वो चौराहा, उम्बरठा, थ्रेशोल्ड, वो वहां पे खड़ा है। वो बॉडी के अंदर आ गया, वो लिविंग है, वो बॉडी के बाहर है तो डेड है। सो व्हेन यू राइट all cells have genetic material, double stranded DNA, dsDNA, right? Then this statement is true for cell, means prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. So eukaryotic cell का DNA ऐसा रहेगा, double stranded dsDNA, जो शेप रखता है
linear. This is linear double stranded DNA. बराबर? ये DNA जो बड़ा लंबा है, ये DNA जो बड़ा लंबा है, वो खुद के साथ कॉइलिंग करेगा, खुद के साथ कॉइलिंग करेगा। ये लंबा थ्रेड है आपके पास, आप उसको कॉइल कर रहे हो, तो आप मुझे बोलो कॉइल करने के बाद उसकी लेंथ कम होगी कि बढ़ेगी? लेंथ कम होगी, थिकनेस बढ़ेगा, राइट? सो आपने डीएनए को थोड़ा कॉइल किया, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको, वो थ्रेड को शब्द है न्यूक्लियोसोम फाइबर। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को थोड़ा कॉइल किया, तो कॉइल्ड जो थिकर डीएनए, थिकर थ्रेड है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम फाइबर। न्यूक्लियोसोम फाइबर को और कॉइलिंग किया तो आपको और थिकर स्ट्रक्चर मिलेगा, उसका नाम है सोलेनॉइड फाइबर। सोलेनॉइड फाइबर को और कॉइल किया तो आपको मिलेगा क्रोमैटिन फाइबर। आपको मिलेगा क्रोमैटिन फाइबर, और क्रोमैटिन फाइबर को और कॉइलिंग करेंगे हम, राइट? दिस इज आल्सो हियर डन कॉइलिंग। कॉइलिंग के बाद लंबा थ्रेड है, 2-4 कॉइल किए न्यूक्लियोसोम फाइबर, और 2-4 कॉइल किए सोलेनॉइड फाइबर, और 2-4 कॉइल किए क्रोमैटिन फाइबर, और फाइनल अल्टीमेट कॉइलिंग कर लिया आपने, तो जो शॉर्टेस्ट थिकेस्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो रहेगा क्रोमोसोम। अगर आपको कहीं क्रोमोसोम का डायग्राम याद आ रहा है, तो क्रोमोसोम का डायग्राम इस प्रकार का होता है। ओके, सो सिंपल, सबसे पहले डीएनए और क्रोमोसोम में रिलेशन क्या है वो बता रहे हैं। DNA coil, again coil itself. Okay, the first package, first coiling का level nucleosome fiber, again coiled, solenoid fiber, again coiled, chromatin fiber, ultimately coiled, shortest thickest structure chromosome. Write down, one double-stranded DNA coiled to produce one chromosome. One DS DNA coiled to produce one chromosome. समझ रहे हो? Right? So, DNA is the genetic material. Fully coiled DNA, chromosome. Right? Then, chromatin fiber, इसको हम क्या बोलेंगे? Is partly coiled DNA. ये क्या है? Partly coiled. देखो आप ही नहीं लिखा है यहाँ पे. Completely uncoiled structure DNA, fully coiled structure chromosome, partly coiled DNA chromatin, partly coiled DNA chromatin. समझ रहे हो? राइट? ओके, सो 3 शब्द समझ में आए? DNA, chromatin, chromosome. अब एक शब्द बचा है gene. What do you mean by gene? See, gene is a segment of DNA. यहाँ पे देखो, इसी को मैं थोड़ा लेबल करती हूँ। DNA का इतना एक टुकड़ा, समझ लो ये टुकड़े पे आपके ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन है। DNA ने अपने इतने एरिया पे लिख के रखा है, this organism's blood group is O positive, right? किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए पे यही जगह पे, the same location, in some other Homo sapien, another human being, it is written that this organism's blood group is AB negative. In some other organism, human, it is written in the same location of the DNA, this organism's blood group is A positive. Getting that? So, the segment of a DNA regulating one character,
Segment of a DNA regulating one character. Segment of a DNA having information to regulate one character. ये DNA इंफॉर्मेशन रखता है जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है. कैसे? नेक्स्ट लेक्चर. Right now you just get the definition. The segment of DNA having information to regulate one character is called one gene. What is this? Gene. तो ये एक प्रकार का जीन हो गया ब्लड ग्रुप का. बराबर. समझ लो यहाँ पे आपके पास दूसरा जीन है. राइट. ये है आई कलर का. ये जीन है आई कलर का. सो दिस इज सेकंड जीन. राइट. इट माइट बी जीन हियर ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन. आपके बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं. तो ये हार्मोन है जो प्रोटीन है. राइट. सो इंसुलिन प्रोडक्शन. राइट. सो आपके एक डीएनए पे अलग अलग जीन्स रहेंगे. हाइट का जीन, ब्लड ग्रुप का जीन, आई कलर का जीन. देन ईयरलोब. याद है 10th को आपको 3 प्रकार के ईयरलोब्स थे. थोड़ा याद है तो बाकी डिटेल में बाद में सीखेंगे. ईयरलोब का शेप, आई कलर, हाइट, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप, टंग रोलिंग कैपेसिटी. थोड़ा याद करो. कलर ब्लाइंडनेस, यस. हीमोफीलिया. इजंट इट डिफरेंट कैरेक्टर्स? तो ये सब क्या है? दे आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए carrying information to regulate that particular character. Okay, so clear with the 4 words. This complete segment double stranded DNA. इसका शेप क्या है? लिनियर. ये कौन से सेल में मिलेगा? ये कौन से सेल में मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल. DNA partly coiled to produce nucleosome fiber. Again partly coiled solenoid fiber. Again coiled. It will be chromatin fiber and ultimately coiled structure will be chromosome. So चलो मेरे साथ रट्टा मारेंगे आप. डीएनए का कॉइलिंग, उसके स्टेजेस शब्द ध्यान में रखने हैं. मीनिंग बाद में और समझेगा. शब्द ध्यान में रखने हैं. बोलो. डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, chromatin fiber, chromosome. One more time. DNA, nucleosome fiber, solenoid fiber, chromatin fiber, chromosome. ये रखना है. Right? So DNA coil ultimately produce chromosome. One DNA coil to produce one chromosome. Partly coiled DNA is chromatin. And a segment of DNA regulating information. Segment of DNA carrying information to regulate a character is gene. Clear with the 4 words? By the way, ये बस मैंने सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन दी. इसके साथ हमको बहुत आगे डिटेल चलना है. सो आगे के क्वेश्चन दिमाग में मत लाओ. आज जितना पढ़ाया उतना समझ रहे हो. That's it. राइट. सो डीएनए काम कैसे करता है, उसके रिलेशन क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर